Hello, dear students. Today we will discuss how to study and understand literature and especially poetry. आज हम बात करेंगे कि साहित्य को कैसे समझें और विशेष रूप से पोइट्री इन इंग्लिश। ये डिस्कशन आइदर ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, नेट, सेट, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्लासेस सबके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। सबसे पहला सवाल ये आता है और जनरली मैं कहता रहा हूं, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ अ वर्क इज इम्पोर्टेंट। हमारे किसी भी तरह के किसी भी स्टेटस के स्टूडेंट से रहे हो, कॉम्पिटिटर से रहे हो, लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी एक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए वो नहीं बन पाता। और जनरली हम आफ्टर अपियरिंग इन एग्जाम्स, फेसिंग एग्जाम्स, वी हैव ग्राइवेंसेज और कॉम्प्लेंस। उसका सीधा सीधा जो मेरे विचारों में है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बेसिकली अब में चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, फॉर्म्स हो, मोमेंट्स हो, या आपका लिटरेरी एनी क्रिएशन, उसका हमें बेस लाइन और उसका बेसिक ग्राउंड समझने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं जो बेसिक चीजें आपके साथ चर्चा में ले रहा हूं, यदि उनको हम बारीकी से समझेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और आप ये समझेंगे कि वास्तव में इनको फॉलो करने से, इनको समझने से हमें लिटरेचर एंड स्पेशली पोइट्री वेरी इजी समझ में आता है। तो लीजिए, सबसे पहले हमारा सवाल ये आता है, व्हाट डज मीन्स लिटरेचर, आइदर प्रोज और पोइट्री। Especially today we are discussing or focusing on poetry part. Regarding poetry part, when we come, then what does mean a poetry? What does mean poem? Then a simple clear cut answer is poetry is just a play of words. क्या है काव्य? आंसर सीधा सा ये है, काव्य कुछ भी तो नहीं है, केवल मात्र शब्दों का खेल है। When the words applied very intellectually, very symbolically, very figuratively, very intellectually, that is regarded poetry. जब शब्दों को बहुत तकनीकी तरीके से, बहुत ही फिगरेटिव तरीके से जब प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम काव्य कहते हैं। अब ये सवाल दूसरा ये आता है कि पोइट्री को समझने के लिए हमारे पास ऐसा क्या कि आपका फार्मूला हो सकता है, क्या हमारे पास ऐसा शॉर्ट तरीका हो सकता है जैसे हमें वेरी बेसिकली, वेरी प्राइमरीली शुड टेक। देन रिमेंबर वन थिंग, to look in and to look out is just to read and to understand the poetry part. काव्य में काव्य की गहराई तक जाना और काव्य के कंपोजिशनल स्ट्रक्चर को समझना, यही आपका पोइट्री है। और यदि इस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, यदि इस तरह की आपकी हैबिट है, आई क्लेम यू विल टेक वेरी इजीली, आपको बहुत आसानी रहेगी। जब हम कह रहे हैं कि लिटरेचर जस्ट प्ले ऑफ वर्ड्स, तो अब सबसे पहला रोल आता है वर्ड। वर्ड इज द कंपोजिशनल पार्ट और कंपोजिशनल प्रोडक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स। कंपोजिशन लैंग्वेज में, वर्ड लैंग्वेज में फ्रेगमेंट्स का एक कंपोजिशनल पार्ट है। एंड आई थिंक
just by going your studies, you have taken the word meaning. Word basically has two aspects, means two meanings. मूल रूप से शब्द के दो अर्थ होंगे, बेसिकली आइसोलेटरी मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग. टू मीनिंग बेसिक रूप से वर्ड के होंगे. देन सेकंड एस्पेक्ट, व्हेन वर्ड इज अप्लाइड इन लैंग्वेज, contextual purpose, there may be more than two. And one thing also remembered, एक बात और ध्यान रखने की, as soon as a word contextually applied in a line, that means it may differ one place to another place, its meaning as well as its pronunciation. A series of word is regarded a line. जो ही हमारे वर्ड्स की एक कॉलोनी बनती है भाषा में, तो उसे हम लाइन बोलते हैं. और जब सीरीज ऑफ वर्ड अ लाइन रिगार्डेड इज कॉल्ड लाइन, दैट मीन्स there are two types of words in a line, isolated word or contextual word. That is, isolated is the structural word. आपका structural word होगा और contextual word होगा. Composition of a word is syllable और fragment. syllable और fragment के संयोग से बनने वाले भाषा के उस प्रोडक्शन को हम वर्ड बोलेंगे. अब ये आता है कि व्हाट डज मीन सिलेबल. सिलेबल का क्या मीनिंग होगा? इन लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज अप्रोच, व्हेन वी कम aside of the poetry, that means syllable is a minimal part in language, minimal part of a word that further can't be broken regarding pronunciation. syllable शब्द का वो आंशिक या शब्दांश होगा जिसको प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से आगे तोड़ा न जा सके. As soon as we have got syllable, that means now structural formation of a poetry with a line has started. अब हमारा पोइट्री का, भाषा का स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप स्टार्ट हो गया. सिलेबल हमने जान लिया. Then in poetry there are two aspects. Very first is a structural aspect and then second one thematic aspect. A student, either academic side or competitive side, very first whenever you have to deal poetry part, structurally we should take. And when we come to structural part, we have known syllables. Then two syllable means a pair of syllable starts to develop word, start to help for the formation of word. And regarding poetry side, in regarding poetry part, a pair of two syllable is called foot. And then continuously, then so on, we can operate on the basis of a syllable, on the basis of a foot. Then ultimately we have result. When we have known foot, that means what is the structural base, what is the structural study, how we should study,
That means a series of words is regarded line. But when parallel line, that means it develops a stanza in poetry. And shortest stanza in poetry with a minimum 2 lines may begin. With minimum and then more stanzas as per the structural approach in poetry, but minimum line, 2 lines also can create a stanza, shortest stanza of 2 lines. When we have known these basic elements to develop lines, words, and to operate words, lines, that means a learner should try to pay the structure of the poetry part. Certain lines starts to develop stanzas. Minimum 2 lines stanza may be. Then when a learner have known stanza, we should also pay to the lines, how many lines are there, how many stanzas are there. When we have taken lines, stanzas, that means the last word of a line is line after line, last ending word for the purpose of sound. And when we have taken the last word for the purpose of sound, that means in poetry rhyme. And when arrangement of rhyme, that is called rhyme scheme. And when we operate the lines, words and length of words, ultimately it will give us meter. And when we come very concludingly to differentiate prose and poetry, if a general question, at what basis prose and poetry differentiate each other? That means very basically it's meter. And secondary, rhyme. On the basis of meter and rhyme, prose and poetry can be differentiated. That means further when we come, how to try to understand the application of literary approaches. One thing to be remembered, figure, and a figure that is applied in a line. In literature, literary figure lies in line. Term, there are basically 2 types of terms. Introductory term, that means throughout literature, it signifies the literary criteria, that means the isolatory or individual literary term, and there is a literary term that has its individual form. That means a literary term itself a complete poem. When you have known literary term, literary figure, that means we should also come to the poetry part. It's a style, tone, theme, and then message. When one deals very cautiously theme of the poetry part, ultimately message comes before us. But it is very tough to go to the depth of the theme. There, the outstanding theme and the supplementary themes.
But very first, we should try to attempt the lying theme. When we have done, then the study of a poetry part, one aspect is a structural part and other the thematic part. In this way, we should try to deal the poetry part. Basic terms, basic words we have known, then you will feel, you will start to deal very easily poetry. As we discuss, a beginner in literature, a cautious one in literature, a learner should pay these steps. You will have helpful this discussion, and by going through, if you comment positively, if you comment that it will be very helpful, then for the purpose of grade second, grade first, we will discuss in a series till your exam take place. For today it's enough, and thank you. We'll meet you in next video.